Thank you so much for doing this. So this is how we do it. We usually start from the very basics. आप कहाँ पैदा हुए थे? मेरी पैदाइश जो है वो है लाहौर की. अच्छा. So my mother and my ननियाल was from लाहौर, तो हम वहाँ पैदा हुए थे. अच्छा. And somewhere near वहाँ जो एरिया था उसका नाम अकबर चौक था. It's a very populated area. But आपके पैदा होने के बाद आपके पैदा होने से पहले? That's the funny part. कहता मैं यही था कि मेरे नाम पे रखा गया, but I don't know. Can't say I was too small then. And then you went to the same school like Lahore में? नहीं, वो तो सिर्फ ननियाल वहाँ थी, तो that's why I was born there. But वैसे we were settled in Karachi. अच्छा. तो शुरू से I've been छोटे स्कूल में तो एक आध स्कूल हैम्पटन स्कूल था इलाके में, क्लिफ्टन में, वहाँ शुरू में पढ़ा जिसको प्ले ग्रुप and all. And my mother was also teaching there. फिर जो असल मेरी स्कूलिंग हुई है that is from the CAS school. तो वो throughout from kindergarten till O levels. What kind of a kid were you? Were you very studious? Were you very sharp? I think both. Wasn't very studious as such, but I was. I think मुझे एक smart बच्चे होते हैं ना. So I was the eldest grandson as well as the eldest son in the house. तो वो joint family में. So probably उस लिहाज से I was very pampered and हर बंदा ख्याल करता था. थोड़ा बड़े होते हैं बड़े लोगों में जो रहते हैं because there weren't other kids around in the house. So उस लिहाज से थे तो, but it wasn't okay. I wouldn't say I had to study too much, but I was sort of smart because घर पे इतने बड़े लोग होते थे and we had a lot of information. But what made you come to a medical school and why Khan? ये तो आप एकदम से बहुत आगे मुझे ले आए from schooling to direct to med school. Actually medical school का ये था कि कोई there was no inspiration as such towards medicine and I always was a math student. अच्छा. और मुझे maths बहुत पसंद थी and I always wanted to do engineering या कोई maths. The only biology I would have done was probably genetic engineering was the thing उस ज़माने में, तो ये था कि शायद genetics कर लूँ मैं. But medicine के लिए some people things that happened were the illnesses of all my grandparents. So वो एक चीज़ थी कि उस दौरान हमें ये होता था कि यार कोई है नहीं फैमिली में जिससे आप पूछेंगे भाई क्या करना है. The only closest relative that we had was the famous Dr Akber Zuberi, जिनके नाम पे लिवर इंस्टीट्यूट भी है. वैसे रिश्ते में देखें तो she was my दादी's first cousin. Okay. So that's like quite far off. लेकिन she was just the focal person. कोई बात होती थी everybody उनसे पूछते थे किसको दिखाएं, कहाँ जाएं, क्या करें, तो उस ज़माने में ये हुआ and जो excuse मिलती थी उस ज़माने में कोई डॉक्टर क्यों नहीं है, पढ़ना बहुत पड़ता है. So I don't think that was a very good excuse. And उसके बाद एक दो teachers ने भी मुझे कहा कि यार आप इस तरफ सोचो, this is a field and you can take it. So सिर्फ पढ़ना पड़ेगा was not something that would deter me. And I took up the challenge. और उसके बाद ये हुआ कि there was no looking back as such. And even though कोई family में नहीं था, कोई guide करने वाला नहीं था, दोस्त भी थे जो लेके चले. एक दोस्त तो आप शायद जानते भी हैं, नबील जो है, नबील जफर who was an alumnus as well. तो वो we were together A level से, तो वो ही उसी के साथ थे, हम तो उनके साथ, वो तो पूरी डॉक्टर फैमिली से है. So वो ही गाइड करता रहता था and फिर सारे एडमिशन प्रोसेस and AKU आना है was the thing कि AKU is the top thing, तो इधर ही अप्लाई करना है. And ये हाल था कि मैंने और कहीं अप्लाई भी नहीं किया था AKU के अलावा. Nice, okay. So it was 1 week before डाउ का जो एडमिशन खत्म हो रहा था कि नबील का आया कि भाई तुमने वो कर लिया, इक्विवेलेंस बना ली और डाउ के लिए अप्लाई कर दिया. मैंने कहा नहीं यार, वो तो AKU के लिए किया हुआ है ना. उसने कहा भाई नहीं हुआ तो क्या होगा. मैंने कहा तो हमने सोचा नहीं था कि नहीं होगा, ये भी हो सकता है. And then फिर वो भागम दौड़ी उसके साथ लग के अप्लाई. जिस दिन हमने अप्लाई किया डाउ का फाइनली लास्ट डे, अगले दिन एक यूज़र होके आ गया खींचिया ले लिया. And then I was here since then. तो फिर हम 2003. How was med school like? So med school शुरू में तो of course it was different and हम लोग जो थे we were the second batch जो PBL शुरू हुआ था, that was a new thing. तो पढ़ने का अंदाज ही different हो गया था. I was more suited to the A level background के लोग. क्योंकि A level तो मेरा था from St. Pat's, तो वो भी एक change था from CAS to St. Pat's. But ये कि O level A level background में यही होता था, लोग बहुत से थे जो O level के बाद उस ज़माने में इंटर करते थे. They thought कि medicine में it's difficult to cope और रट्टा होता है और क्या होता है.
But जब हम आए तो we were lucky कि PBL system was more, suited and was more according to what the way we were taught. और conceptual और खुद से concepts को जोड़ना और पढ़ना rather than रट्टा करना. So इसलिए it was fun, enjoying. But AKU में जो problem होती है वो ये कि देखिए स्कूल में 2-3 बच्चे होते हैं, आप लोग टॉप करते हैं, 2-3 का कंपटीशन होता है, आप लगे होते हैं, यहाँ तो क्रीम सारी आती है. And then काफी problems होती हैं उसकी वजह से, and there were fluctuations, so it's difficult maintaining consistency here जब आप as a student होते हैं. But then जो अच्छी चीज थी उस जमाने में भी was that they sort of inculcated कि हमारा competition आपस में नहीं है, it's more of a competition with a standard, and हम लोग अगर उस तरह चलेंगे तो then it's more of satisfying होता है कि भाई मैंने ये achieve करना, उसने क्या किया is not a concern for me, as long as I've achieved what I have to achieve. So that was the way forward to the Sibir. Once you were done with your MBBS, did you know at that point in time कि हाँ orthopedics करनी है या surgery करनी है? चलो देखिए during my early years, जब clinical years शुरू हुए ना, first 2 years में तो of course you were a blank slate, उस वक्त तो कुछ पता ही नहीं था क्या करना है, और वही था कि जो दोस्त कर रहे होते थे यहाँ elective कर लो, उसके साथ research कर लो, तो थोड़ी बहुत वो चीज़ें की. But जब clinical years आए ना तो I was so naive, first rotation was family medicine, और family medicine लगा, मैंने कहा ये this is the thing, ये करनी चाहिए. तो बच्चा लोग है family medicine, they can treat everything. And अपनी उसके हैं, they don't need anything, कहीं clinic खोलो and they can manage everything. So I was really impressed. मैंने कहा ये करना चाहिए. Next rotation आई तो फिर मैंने कहा यार ये काम है, असल तो यार आई इतना delicate and जो जिस तरह के यहाँ पे लोग थे, डॉक्टर आजम अली मरूम थे उस वक्त, डॉक्टर मकसूद बर्क was a mentor to me, तो उस वक्त लगता था कि ये है. But then when I got into conversation with faculty जब हम clinical में आते गए, उसमें definitely orthopedic was also one of the first loves. जिस दिन हम घुसे हैं फर्स्ट दिन डॉक्टर मसूद थे, उन्होंने कहा यू वांट टू स्क्रब, जाओ स्क्रब करके आ जाओ, पहला दिन स्क्रब करके खड़े हो गए. सो सब एवरी रोटेशन वाज वेरी एक्साइटिंग और हम लोग इतने नाइव होते थे कि यार यही करना है. बट ऑर्थोपेडिक्स सॉर्ट ऑफ क्लिक्ड. उसमें मल्टीपल रीजंस थे. एक रीजन तो यही था कि आई डिड दैट रोटेशन 3 times क्योंकि इत्तेफाक से बिकॉज ऑफ क्लरिकल एरर्स आई गॉट I had to repeat the rotation. अब वो फिर वो चीज़ भूल जाता था, वो मैं तुम्हारा लिस्ट में नाम डालना भूल गया, कुछ इस टाइप के इश्यूज हुए थे. So तीसरी दफ़ा वो की. The other thing was कि I think it was more hands-on, gross था. फिर AKU grads हमें नज़र आ रहे थे as mentors. ऊपर residency में भी उसमें डॉक्टर आकिल थे, डॉक्टर ताशमीन was the chief, डॉक्टर शरियार was an instructor, फिर आगे डॉक्टर मसूद, everybody. तो एक लगता था कि हाँ यार this is the place. फिर variety बहुत थी, सब specialities नज़र आ रही थी. And जो मुझे चीज़ attract की हुई है कि learning was easy in the sense कि everything was gross and macro, as compared to उस other specialities में everything was now endoscopic और urology में भी उसी तरह था वो करना. So I thought more difficult to learn and होगा probably that was one of the reasons, and definitely the choice of body fluids के कौन सी body cavity में आपने जाना है. So that's how orthopedics was there. फिर मैंने उसमें electives और वो की, and the more I went into it research wise and more I got interested, and by end of 4th year I was focused. मुझे पता था orthopedics करनी है और यहीं से करनी है. So I was at mental peace, unlike my other class fellows जो के aspiring neurosurgeons and cardiac surgeons. In the end they were doing internal medicine अमेरिका जाने के लिए, and फिर वो वीजे के मसले उस जमाने में तो ये post 9/11 के ये भी चल रहा था. So उस लिहाज से I was focused. I knew कि अगला गोल क्या है, क्या करना है. अच्छा, जैसे आपने कहा कि अमूमन हमने ये भी देखा है कि AKU के ग्रेजुएट्स जो होते हैं वो दे ऑप्ट फॉर गोइंग अब्रॉड और वहाँ जाके करते हैं. आपके पास probably you had the choice as well. Why did you opt to stay here and do your residency here? What do you think is, how do you think is the program here as a residency program? AKU का कैसा है? Should people stay in Pakistan and do this? Is it worth it? देखिए from that point of view इसमें 2-3 चीज़ें हैं. One is of course the program के बारे में तो there was no doubt. If you want to survive here, because there were so many examples in front of us, people AKU alumni who've stayed back, done the residency here and they're as good or maybe sometimes even much better than other people. So
and many who are not AKU alumnus. Dr. Parvez Hashim is a prime example. यहाँ से करके, and he is the super surgeon. And Dr. Solat भी उस ज़माने में यही कहते थे यार उस तरह का बंदा तो अमेरिका में भी मुझे स्किल का आदमी नहीं मिलता कि he's so gifted and talented. So ये चीज़ तो नहीं थी कि मतलब अमेरिका से ही सीख के आएंगे आप ये करेंगे. For me the reasons were, one was I was a little chicken in the sense कि मुझे था कि मैं अगर गया और मुझे वो फिर वहाँ समझ में आया, it would be difficult coming back. So knowing myself, I knew कि अगर मुझे opportunity मिल गई फिर I might not look back. And because that was when I reflected upon कि बने क्यों हैं डॉक्टर, यार बने इसी उससे थे कि खानदान में कोई नहीं है, and आपके होना चाहिए, and अगर मैं ही चला जाऊंगा तो then that religion is exactly lost. So इस वजह से, and the third thing was that what I felt was जब हम यहाँ पे भी देखते थे ना people who've come back from abroad versus who've trained here, उस वक्त जो examples थे वहाँ पे डॉक्टर तारिक थे, डॉक्टर महमूद रियाज थे जिन्होंने यहाँ से किया था, तो देवर डॉक्टर कामरान थे जो रोमोटोलॉजिस्ट होते थे. So these were people जिन्होंने यहीं से ट्रेन किया था, they knew कि यहाँ के सिस्टम के nuances, यहाँ किस तरह की पैथोलॉजी आती है, लोगों का मिजाज, सिस्टम का मिजाज. So I thought कि that is also an advantage. जब पता है कि यहीं आके प्रैक्टिस करनी है आपने, so why not train from here and learn from here, and that has been a significant advantage कि आप जब इसी सिस्टम से गुजरते हैं आपको सिस्टम की सारी वर्किंग्स पता होती है. So जब आपने यही काम करना है, I think you're better suited learning from there here only rather than कि आप बाहर से आके again adjust होना पड़े आपको यहाँ पे. So these were a couple of factors जिस वजह से ये था कि मैंने डिसाइड किया कि I have to do it here. Of course आखिरी फैक्टर ये भी था कि ऑर्थोपेडिक्स बहुत मुश्किल से बाहर मिलती है. So इतने हम वो नहीं थे उस जमाने में कि to go ahead और पहले जनरल सर्जरी करें, रिसर्च करें, फिर बुढ़ापे में कभी जाके ऑर्थोपेडिक्स करें. So this was a more straight pathway. And तभी मैंने USMLE भी नहीं दिया इसी डर से, क्योंकि if I have the USMLE with me तो किसी भी बात I might chicken out and go abroad. तो इसलिए हमने कहा कश्तियाँ चला के यहीं पे रहेंगे. And that has been mashallah say satisfactory for you. Alhamdulillah, देखिए it has been difficult because at that time जब आप मेडिकल स्कूल से निकल के आप आते हैं हाउस जॉब, तो जो आपको प्रेस्टीज, जो इज्जत, जो मोहब्बत आपको एज अ मेडिकल स्टूडेंट इधर मिल रही होती है वो आपको exactly as an intern तो फिर आप just as any other intern, there is no prestige, there is no difference, कोई सैलरी में फर्क नहीं है, कोई बेनिफिट्स में फर्क नहीं है, एक alumni कार्ड आप ले सकते हैं बस जाके, that is all. So वही रेजिडेंसी में भी होता है कि you have to compete at the same level. उस जमाने में तो टेस्ट में सब चीज, there was no exemption, nothing, no extra marks. So and then definitely यहाँ पे survive करना है, इधर सैलरी भी कम थी, जो लोग बाहर जाते थे हमारे वो डॉलर्स में they were enjoying. So it was a difficult thing. लेकिन I had a lot of support from my family, joint family थी, so उसमें हुआ, and इसी में शादी करना and family रखना इतनी सी सैलरी में, so it was difficult. But ये कि without this joint family luxury I think शायद ना हो सकता ये चीज. अच्छा, उसके बाद once you were done with your residency, obviously you're intending, but you opted for doing all of these fellowships that we heard today. Let's start from being here in Pakistan. एक तो ये कि आपने यहीं से सबसे पहले जो अपनी फेलोशिप की, आपने ऑप्ट किया कि नहीं पाकिस्तान में रह के ही पाकिस्तान के लोगों के साथ ही और उन्हीं के ऊपर सीखना है. तो what's the perspective in that? Like, should we do fellowships here in Pakistan? Do you think that's worthwhile? या जैसे आजकल का ट्रेंड है कि even residency चले तो यहाँ से कर लेते हैं, people opt to go abroad and then they come back, and so let's just first start there. I think that this is very dependent on a lot of factors, and dependent on speciality specific भी है and आपके goals and mission specific भी है. For me, what was different was that if I would have been going for something like arthroplasty या hand surgery जो हम यहाँ पे बहुत देखते हैं और हम we were proficient, हम level 1 कर भी रहे थे as chief resident, then तो 3 महीने की बाहर कहीं भी मिले उसमें आपको hands on मिले ना मिले, I would have managed. But for something like spine surgery जो मुझे करनी
बनी थी जो यहाँ हमने बहुत लिमिटेड देखी थी, एंड दिस वाज समथिंग न्यू एंड दिस इज सच एन अपकमिंग फील्ड, इतनी चीज़ें चेंज हो रही हैं उसमें कि जो यहाँ प्रैक्टिस हो रही थी उससे दुनिया में अब बढ़ती चली जा रही है. सो उधर हैंड्स ऑन होना वाज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड थिंग वाज कि देखें जब व्हेन आई अप्लाइड फॉर फेलोशिप्स अब्रॉड द इश्यूज देयर वर कि टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट बहुत हो गई है. सो फॉर दोज पीपल हु आर ट्रेनिंग और पुटिंग स्क्रूज अंडर नेविगेशन, सो वो एक किस्म का हैंडीकैप हो जाता है. देन दे कैन नॉट पुट विदाउट नेविगेशन. एंड हमने देखा वहाँ के लोग अभी इस साल भी कॉन्फ्रेंस में लोग यही शिकायत कर रहे थे वहाँ के रेजिडेंट्स के हम नेविगेशन के बगैर भी कांट डू एनीथिंग. सो यहाँ तो देन दैट वाज अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज, इवन दो दिल में यही होता था कि यार बाहर की छाप हो, फेलोशिप बाहर से करें, ये करें, बट जो यहाँ हैंड्स ऑन मिला हमें, दैट वाज गुड. सेकेंडली ऑफ कोर्स लेकिन नॉट ऑल सेंटर्स आर द सेम. तो सेंटर्स भी आपको देख के चूज करने होते हैं, बट इफ यू गो आउट देयर आर सेंटर्स, कॉम्प्रोमाइजेस हैं. The training program might not be as structured as the Western programs are, but many times अगर आपने वो skill सीख ली है तो structure को आपने क्या करना है, और structure बहुत हो और in the end आप वो skill ना सीख सके तो you're done. So वो advantage definitely था. और ये वाली जो fellowship जो मैंने की पिंडी में वो was even a lower resource area than AKU itself. So that was a significant advantage कि अब for example spine पे दोनों तरफ से डाइसेक्शन करना, दोनों तरफ से स्क्रू डालना, अकेले खड़े हो गए द पर्सन जो न्यूरो मॉनिटरिंग टेक्नीशियन हो या कोई ऐसे टेक्नीशियन लेवल के बंदे के साथ भी आपको काम करना पड़े, सो यू कैन डू इट. एंड दैट वाज अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज दैट आई हैड व्हेन आई केम बैक, क्योंकि ऑफ कोर्स रेजिडेंट्स यहाँ होते थे, चीज़ों में पता नहीं है, तो आई वाज कंफर्टेबल वर्किंग ऑल अलोन विद एवरीथिंग, विद द बेयर मिनिमम इंस्ट्रूमेंट्स एंड थिंग्स दैट आई हैड. क्रूड इंस्ट्रूमेंट जो ऑर्थोपेडिक के जनरल होते हैं, कोई स्पेशल चीज़ें नहीं चाहिए थी. So उस तरह survival was easy and we were able to do. फिर of course यहाँ पे luxury items available थी, then we started using them. Exactly. But ये कि at least training level पे था. Second, volume matters because हम जो थे ना बिल्कुल 0 मीटर थे spine के मामले में, so I needed a lot of hands-on volume. और स्पाइन का क्योंकि यही मशहूर था, लर्निंग कर्व इज बिग. सो आज आई मेंशन मैक्स एबी, तो ही इज वन ऑफ द फादर्स ऑफ स्पाइन एंड ही वाज अ मेंटर फॉर दैट डिपार्टमेंट. तो वो व्हेन ही यूज्ड टू कम एवरी ईयर ना, तो वो आके एक बार जब सेकंड ईयर फेलो आया जिस साल, तो उसने मुझे देखा. आई वाज डूइंग वेरी कॉम्प्लेक्स वर्टिब्रल कॉलम डिसेक्शन वाली सर्जरी की, सबकी स्टैंडिंग देयर खड़ा रहा. फिर उसने कहा मैं साथ आता हूँ वॉश करके, ही सॉ मी डू एवरीथिंग. जब केस हो गया ना उसके बाद उसने मुझे कहा, उसने कहा जब तुम केस कर रहे थे ना, वी एज अ सेकंड ईयर फेलो, अगर तुम यूरोप में या कहीं होते ना तो 5 साल प्रैक्टिस के बाद भी तुम सोचते नहीं ये करने की. तो आई थॉट मुझे ऐसे ही पंप करना है, ये तो गोरों का तो काम ही होता है कि चढ़ा दो इनको. बट व्हाट हैपेंड वाज बाद में पता चला ही इज अ स्विस जर्मन, so Germans are very blunt. And when I went for my foreign fellowships, then I found out how true that was, because उनका structured system तो है, but वहाँ जब तक आपको responsibility मिलती है, you're able to exactly, because volumes और जो उनका system से आप गुजर के जाए, यहाँ we got that hands on very early. And definitely उसमें AKU की एक छाप थी कि वहाँ पे मुझे बहुत पैम्पर किया गया, जो आज मैंने उसमें इतना नहीं बताया, but I was like a show toy there as well. कि जैन साहब मुझे अक्सर बुलवाते थे कि जुबेरी को बुलाओ किधर है, and then कोई जनरल या कोई आया हुआ तो उसको दिखा खान से आए हुए हमारे पास ट्रेनिंग करने के लिए. So that was a thing there कि he was also very excited कि इस तरह का ट्रेनिंग आया from a prestigious place. And I of course liked that attention because he was a very good academician, he was a very good mentor, और अखलाकी तौर पे he was a very good person. तो उनके साथ every minute you got to learn something, and उन्होंने बहुत ख्याल किया, and probably that was the thing. और कितना टाइम जो लगा, 2 साल एक्स्ट्रा जो लगाए, so I was like part of family for it. अच्छा, दूसरी बात, how important do you think is getting fellowships? Is one fellowship enough? Is there a number, the amount of fellowships that you should do, or plus a lot of people, there's also critique that people get, yaar ye to bas fellowship hi kiya ja raha hai, kuch nahi kara. So what do you think is the right way to go about it? Again, this will depend on a lot of factors, लेकिन उसको ये ना कि goal, vision and mission क्या है आपकी fellowship का ना. So for the first fellowship जो मेरी थी, the goal and vision was of course 0 हम scratch से start कर रहे हैं, I have to become a spine surgeon. But उसके बाद fellowships का ये होता है कि then sometimes it changes perspective. आप कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नई टेक्निक सीखना चाह रहे हैं, focus
because that was the advice I was given by Nasir Qureshi in Nottingham as well. So जब मैं गया था ना उस वक्त I thought more of fellowship as a छाप, because I thought यार AKU आऊँगा मेरे पास कोई foreign fellowship का 1-2 साल का छाप नहीं होगा तो कोई respect नहीं होगी, even though I knew how to do most of the things. So he told me this. He said कि यार तुम्हें सब आता है काम, तुम ये वापस से करके not gain anything, and ये छाप से कुछ नहीं होता. He gave me this advice कि अब तुम go back into practice, see what things are there, and फिर अगर आपको कोई focused area है, patient ज़्यादा आ रहे हैं, you feel यार I need a little more knowledge in this area or a little more skill or things, then फिर आप focused करें fellowship. So जो second job मैंने यहाँ पे आके fellowship की, उसका मकसद ये था. So one was a local जो सीखने की थी. First foreign was touch of foreign के भाग क्या होता है first world का, आपके पास experience and exposure होना चाहिए. So the second fellowship फिर यही हुई when I came here, and deformity का load एक आया, because deformity यहाँ और कोई नहीं कर रहा था, डॉक्टर इम्तियाज सिर्फ करते थे, वो भी बीच में फिर moved to Dubai. So I felt कि यार deformity में खास तौर से pediatric, because that's a ever changing field, उसमें नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए नए implants, नई नई techniques. So उसको फिर मैंने use करके that was my focus. So अब जो होता है ना second fellowship, third fellowship, कोई नई technique के लिए आप जा रहे हैं तो smaller fellowship is fine. अगर आप focused उसके लिए जा रहे हैं, कभी-कभी small traveling fellowships के भी बहुत spine में खास तौर से है, because spine is not an exact science as yet. तो हर बंदा different तरीके से कर रहा है, there are a lot of ways to skin the cat. So traveling fellowship से आपका exposure बढ़ता है, आपकी the arsenal that you have to treat all these problems वो बढ़ जाता है, techniques, लोगों के तजर्बे and wisdom से आप गुर सीखते हैं. So उसके लिए smaller fellowships, 1-2 हफ्ते की traveling is the concept that is there, and लोग करते हैं. But doing the whole fellowship again, या ये कि मैं कोई और arthroplasty या something else करूँ with spine, I didn't feel the need. लोग करते हैं. So you need to focus. But वो ये ना, the more you focus, the more you tone down, the better your expertise can be. अच्छा, so you're a spine surgeon. Probably when you were starting off, क्योंकि a lot of people think कि भाई spine तो neurosurgery वाले करते हैं. Did you have this fear कि यार अच्छा हो सकता है मुझे काम ही ना मिले, number one. Number two, मैं करूँगा तो obviously people will say कि यार ये orthopedic surgeon है. Orthopedics are known for doing rest of the limbs and whatever. But spine, why spine? Number one, what attracted you towards spine, and how did you deal with this fear of doing spine and not having enough patients or not having enough referrals or having most of them go to neurosurgery, having to work with neurosurgery? बहुत ही बड़ा सवाल हो गया. So spine में जाना was it wasn't something spontaneous, वो भी चीजें होती चली गई उस तरफ. तो I went to a workshop, that was the first time. This was I think way back in 2014, and उस वक्त तक spine का कोई idea नहीं था मुझे. So नीयत सिर्फ ये थी कि exam में तो आएगी spine, so I need to have a little idea कि spine क्या है. तो workshop में जाएंगे, सीख जाएंगे, और examiners भी होंगे वहाँ पे, तो it's going to be an easy go. तो गया उस नीयत से था. Orthopedic Association की workshop थी, but there I met my mentor General Asad was also there, and बस फिर वो एक चीज spark हुई. मैंने कहा spine इतनी मुश्किल भी नहीं है, जिस तरह के लोग सब वो लोग कर रहे हैं, तो I can also do it. So फिर वो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बना. Then next year I went for electives उधर, and वो चीजें होती चली गई till my fellowship. But इसमें जो चीज है ना वो ये कि ये जो fear है कि न्यूरोसर्जरी का है कि ये इस तरह की ग्रे एरियाज हम पहले भी डील कर रहे थे. फॉर एग्जांपल हैंड सर्जरी है, always a gray area. So gray areas were always there. ये कहता है वो सही नहीं करते, वो कहते हैं ये सही नहीं करते. But I think it's not about that fight, it's about training. अगर आपने ट्रेन किया है then तो देखें आपने किसी भी स्पेशलिटी में जाते हैं, you have to prove your worth. तो ऑर्थोपेडिक है या न्यूरो है, नहीं होता. अगर स्पाइन सर्जरी में आपने अपनी वर्थ प्रूव करने आपको करके दिखाना होगा. बट क्लासिकली जो न्यूरो एंड ऑर्थो में डिवाइड रहा है वो ये रहा है कि न्यूरो जो इंट्रा ड्यूरल और इंट्रा क्या कहना चाहिए मेडुलर काम होता है, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर का काम वो लोग ही करते हैं. ऑर्थोपेडिक यूजुअली उसमें नहीं घुसते. एंड सिमिलरली डिफॉर्मिटी वाला जो काम है वो यूजुअली ऑर्थोपेडिक ही करते हैं, उसमें वो नहीं घुसते. बीच का जो ये ग्रे एरिया है और decompression and fixation, we can always work together. बट ये था कि तो I always knew कि अगर मैंने एज एन ऑर्थोपेडिक वो करना है, मेरे सामने मेंटोर्स एंड एग्जांपल्स थे, was कि I have to switch myself to ये वाला डिफॉर्मिटी एंड वो वाला स्पाइन जो और लोग नहीं कर रहे हैं. एंड उसकी नीड बहुत थी. when I practically evaluated क्या स्पाइन करनी है तो क्या, तो शहर में है ही नहीं. there are 30 million की
आबादी में उस वक्त एक डॉक्टर इम्तियाज के एक या दो लोग थे कि जो ऑर्थोपेडिक स्पाइन यानी डिफॉर्मिटीज और ये कर रहे थे, एज कम्पेयर टू लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में ठीक-ठाक काफ़ी हैं। सो दिस वाज अ प्लेस जो मतलब डर थी एंड इट वाज नीडेड कि कोई करे और आए, एंड यानी वो इट इज अ डर्टी जॉब, somebody has to do it. तो because of course शहर में ही होता ना, doesn't pay that well as compared to the amount of hours and amount of मेहनत that is needed. Secondly यही था कि ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज और वो चीज़ें नहीं थी, तो अब वो चीज़ें were getting solved. तो I think वो universe was pushing me towards this एंड होता चला गया. सो उसमें ये जो ग्रे एरिया से कभी हम लड़े नहीं, यहाँ के भी और वहाँ पे भी जो हमारे मेंटर्स ने भी सिखाया था वो यही था कि देखें, एक तो ये कि आप ऑर्थोपेडिक्स में भी व्हाट ही डिड वाज जनरल असद के ही लेफ्ट ऑर्थोपेडिक्स, डिड जस्ट स्पाइन, एंड ही टोल्ड मी, उन्होंने कहा यही है कि ऑर्थोपेडिक्स वाले मुझे स्पाइन इसलिए रेफर करते हैं बिकॉज दे नो कि मैं उनकी कैसे नहीं लूंगा. अच्छा न्यूरोसर्जन्स भी स्पाइन रेफर करते थे इनको जो कॉम्प्लेक्स होते थे बिकॉज दे न्यू कि जी बाकी ये कोई क्रेनियल चीजें नहीं ले लेगा, ना ट्यूमर ले लेंगे. सही है ना. सो यू हैव टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ अ रिस्पेक्ट एंड उसमें, और यही मैंने यहाँ आके किया बिकॉज यू नो शुरू में फर्स्ट 2 years आर डिफिकल्ट, आपके केसेस कम होते हैं, जो चीज़ आ रही होती है यू नो यूर इन द हैंड सर्जन मोड के जो हाथ आए आप ऑपरेट कर रहे टू सर्वाइव. बट उन दिनों में कुर्बानी दी मैंने, एंड आई डिडंट फॉल फॉर दिस ट्रैप कि जी जो भी आ रहा है मिलो किसी के साथ मिल के कर दो या यू नो हर तरफ जाए. आई फोकस माई सेल्फ ऑन स्पाइन. आई सेड वो 2 साल मुश्किल गुजारे हैं एंड देन यू नो थिंग्स स्टार्टेड फ्लोइंग बिकॉज एवरीबडी न्यू कि हाँ यार ये सिर्फ स्पाइन कर रहा है. तो आई हैड लॉट ऑफ लोकल रेफरल एज वेल, कोलैबोरेशन जैसे मैंने आज बताई सब के साथ हुई. एंड देन डेफिनेटली वो फिर आपका टाइम आता है. मेरा टाइम आई थिंक जो अभी एकदम से वॉल्यूम स्टार्ट हुई है was last year. उसमें ये फेलोशिप भी थी, बट फेलोशिप तो खैर होती रहती है, उन लोगों को नहीं पता. वो डॉक्टर इम्तियाज का यू नो गोइंग टू दुबई वाज अ फैक्टर. एकदम से एक डर्थ बनी एंड देन एवरीथिंग फोकस टुवर्ड्स मी और कोई कर नहीं रहा था. परसिस्टेंस डेफिनेटली. तो वो यू विल गेट टू इट एट सेट टाइम जब आपका है. जल्दबाजी से तो नहीं होगा, बट अगर इफ यू लूज ट्रैक और फिर मैं नी रिप्लेसमेंट या कहीं और लग जाता फिर ये चीज एग्जैक्टली. How important do you think is having a mentor, and how do you find that mentor? Do you think a mentor will be, I know I'm asking a lot of questions in just one, but do you think you can have just one mentor, or it can be an amalgamation of a lot of people who would help you in different aspects of your life? Initially देखिए I always thought क्योंकि वो जैसे even religious circles में भी होता है ना कि वो बस एक मुर्शिद एक शेख होता है and you just follow him और वो आपको they lead you through. So I always thought कि यार मेडिसिन में भी इस तरह एक mentor हो और आप बस उसके साथ लग जाए करें. एंड हमारे सामने एग्जांपल्स थे जिस डॉक्टर मसूद है, डॉक्टर मोहम्मद उमर के साथ, यू नो ही वाज जस्ट देयर हर वक्त के साथ और वो करना. डॉक्टर हारून के थे, डॉक्टर चीमा और उस तरह वो लगे रहते थे. बट फॉर मी व्हाट हैपेंड वाज कि व्हाट आई सॉ वाज कि यू नो दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू एंड दैट्स नॉट व्हाट यू नीड ऑलवेज कि एक ही बंदा और शुरू से आखिर तक आप उसी तरह चलते रहें. सो वी डोंट नेसेसरली हैव टू बिकम अ रिफ्लेक्शन ऑफ सम वन पर्सन, बट ये कि जो स्टेप्स I got mentors at different steps और वो different किस्म के speciality उस वक्त की needs different थी, उस हिसाब से I got mentors. So orthopedics में as a student Dr. Masood was the one उनके साथ rotate की थी, उन्होंने सारा support किया, electives भी किए, I got it. फिर when I came here तो of course I had other mentors. My supervisor was Dr. Shariar, Dr. Hashmi was a mentor, वो मुझे इतने cases में involved even from first second year hands on उन्होंने बहुत दिया. Dr. Riaz was a mentor, उन्होंने जिस तरह मैंने आज केस भी दिखाया था, used to trust me with his cases और residents को इतना नहीं देते थे. So you know वो एक relationship बनी डॉक्टर अथर से बनी यहाँ पे in different regards. He was the chair जब मैं chief resident था. डॉक्टर मुनीर अमानुल्लाह से एक अलग वो बनी थी, was the associate dean, वो बहुत करते थे हमारा अलग से. You know डॉक्टर तारिक, डॉक्टर बारिश के दवाई जो सीनियर्स थे इन लोगों से ऑफर अमाउंट रहती थी. डॉक्टर मकसूद बर्क has been a mentor, वो as a family friend भी थे. And वो थे it's different उसमें and you know बहुत सारी होती है कुछ advices, कुछ चीजें आप डिफरेंट लोगों से लेते हैं. some wisdom you need from some people. फिर जैसे I graduated तो of course fellowship डॉक्टर असद was there, 2 साल उन्होंने मुझे बहुत किया. फिर जब वहाँ गया नॉटिंगम में तो my fellowship was with Mike Rabbit on paper, but Nasir Qureshi was my mentor there. उन्होंने ख्याल किया, he guided me a lot. बाद तक you know I used to WhatsApp, ठीक है, मैं मैक से भी अक्सर हम पूछते रहते थे, करते रहते थे. he was a mentor. तो वो different things के लिए you need that mentor. So it's not always कि आपको एक बंदा है और चलेगा.
फिर जब यहाँ आए तो डॉक्टर सदफ खान मुझे ऑफिशियली असाइन हुई एज अ फैकल्टी मेंटोर एंड वो भी हमारी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं तो उनसे डिफरेंट किस्म की मेंटोरशिप मिलती है। डॉक्टर असद अली जो रिसर्च वाले CHS के प्रोफेसर हैं, ही इज आल्सो माय ब्रदर इन लॉ, तो उनसे एक अलग किस्म की मेंटोरशिप और जो शादी में बैठते हैं डिस्कस करते हैं बातें वो मिलती है। सो यू हैव दैट बिट्स ऑफ पीसेस एंड देन यू हैव योर कलीग्स एंड फ्रेंड्स एज मेंटोर्स। फॉर मी डॉक्टर रिजवान, डॉक्टर यासिर जो मेरे साथ के हैं, रेजिडेंसी साथ के, और दे आर लाइक फ्रेंड्स एंड मेंटोर्स, और बहुत सी चीजें उनसे डिस्कस करते हैं। डॉक्टर मसूद अभी तक कभी मैं जाके उनसे भी चीजें पूछनी करनी। सो दैट प्रोसेस गोज ऑन। तो आई डोंट थिंक इसको इतना लिमिट करना चाहिए कि हम करें। एंड मेनी टाइम्स फॉर मी इट हैज बीन कि जितने ज्यादा मशवरे करते हैं उतनी कॉम्प्लिकेट नहीं होती, बट यू गेट लॉट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू एंड आइडियाज एंड देन इट्स योर जॉब टू assimilate them and move forward. Agar if you have to give one message to all the viewers, your residents, maybe a certain fellow that you want on board, or the people out there, what will be that one message that you've learned, or that's something that you would want them to hear? जो है ना वो ओवर स्मार्ट एक्ट करते हैं। व्हाट दे डू इज दे फील यार कि मैंने ये काम करना है, ये नहीं करना, तो बस पे लिफ्ट नहीं करा हो, बस मैं ये करूंगा तो यूं हो जाएगा। बट आज भी माय प्रेजेंटेशन व्हाट आई शोड वाज दैट यू नेवर नो व्हाट यू आर लर्निंग एट व्हाट स्टेज फ्रॉम व्हाट पर्सन। सर्कमसिजन के अलावा भी आपकी जो डिफॉर्मिटी करेक्शन के प्रिंसिपल्स थे, स्कोलियोसिस डिफॉर्मिटी मैंने करेक्ट करनी थी, बट अल्लाह ताला वाज ट्रेनिंग मी फॉर दैट वाया डॉक्टर हारून के वो लेजर ऑफ लिम्ब की डिफॉर्मिटी एंगल्स, वो कॉन्सेप्ट्स जो मैंने वहां बनाए थे, दे हेल्प मी ट्रांसलेट दोस कॉन्सेप्ट्स है। उसी तरह मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी के जो हमारे प्रिंसिपल्स थे, किस तरह होती है इमेजिंग देखना करना, जो ट्रॉमा में थी मीपो हमने शुरू की थी, नीलिंग बोन ने आप MIS में अप्लाई, उसी तरह हैंडलिंग लूप्स पहनना और सब डॉक्टर आशमी के साथ हैंड सर्जरी में मैंने शुरू किया था एज अ रेजिडेंट। आई गॉट माय ओन लूप्स, आई इन्वेस्टेड ऑन इट, तो वो मुझे अभी तक फायदा है। आई स्टिल यूज लूप्स, I don't use a microscope. तो those things you never know कि आपको क्या क्या चीज कहाँ जा रही है। So what my advice would be कि जिस रोटेशन में है, जिधर आप जा रहे हैं, जो आपसे उस लेवल पे एक्सपेक्टेड है like a primary resident, उस तरह लग के करें and get the most out of that, and you never know कि वो नॉलेज और वो प्रिंसिपल्स आप कहाँ काम आएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ होता है जब आप रोटेटर ईयर्स में होते हैं, आप समझते हैं जनरल सर्जरी कर रहे हैं, हमने तो जनरल सर्जरी करनी नहीं है, हम आगे जाएंगे। सेकेंडली जो है ये होता है कि जब आप फॉर एग्जांपल ऑर्थो में प्राइमरी आ गया, अब आप ये कहते हैं यार मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हूँ, तो मुझे किस तरह कट वर्क मिल जाए, वो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वाला काम मुझे होता है फर्स्ट में। एंड मैंने जो ट्रिपिंग करनी है, पोजिशनिंग करनी है, बेसिक चीजें पढ़नी है, जो मेरे से एक्सपेक्टेड है, जो मैंने काम करना है, वो मैं नहीं सीखता। लास्टली ये होता है कि कभी कभी हमारे यहाँ उसी वजह से ये होता है कि हम मेंटल ब्लॉक्स भी लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली सब स्पेशलिटी है, ट्यूमर है, स्पाइन है हमारे यहाँ, या ये ब्रेकियल प्लेक्सस हैंड सर्जरी होती है, रेजिडेंट्स एक मेंटल ब्लॉक लगा देते हैं, ये काम तो हमने करना ही नहीं है। तो ना पढ़ना है हमने, ना समझना है, हम बस ज़ॉम्बी की तरह केस में अगर खड़ा करेंगे तो खड़े हो जाएंगे। दैट इज रॉन्ग। बहुत सी बार आप पढ़ें करें, आप जब स्ट्रगल करेंगे चीज़ें सीखेंगे, हो सकता है आप स्पाइन ना करें, हो सकता है आप ट्यूमर ना करें, नॉलेज विल कम। सो कि मैं अभी भी फील कर रहा हूँ, मेरे पास जब रेजिडेंट्स आते हैं वो एक मेंटल ब्लॉक के साथ आते हैं, जो वो 3 महीने बाद भी वो कुछ पढ़ के नहीं जाते स्पाइन में से कि उन्होंने एक वो ब्लॉक रखा हुआ है, स्पाइन तो हम कर ही नहीं सकते, या वो ऐसी चीज है कि इट्स टू एडवांस फॉर अस। तो दैट इज नॉट द केस। एंड इसका मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, आई वाज R1 सेकंड ईयर, और कार्डियक सर्जरी में हम डॉक्टर सोलत के थिएटर में होते थे, और वो इतनी एडवांस एक चीज है, मतलब एक R1 सेकंड मंथ इनटू द हॉस्पिटल, उसका क्या रोल वहाँ पे, बट ही यूज्ड टू मेक अस हमारे रोल के हिसाब से कुछ ना कुछ इंगेज करते थे, काम देते थे हमें, एंड उसी से हमें अंदाजा हुआ, चीजें इतनी सीखी हमने, इवन तो हमारा वो लेवल नहीं था उसको, बट बिकॉज वी टुक दैट इंटरेस्ट एंड वी वर गिवन दैट, तो इट हेल्प्ड अस लेटर ऑन बहुत सारी चीजों में। सो दैट्स माय मैसेज कि जी जहाँ भी जिस रोटेशन में जिस लेवल पे उस लेवल की चीजें करें, आगे की चीजें विल कम, विल फॉलो, एंड जितनी आपकी बुनियाद मजबूत होगी उतनी आपकी बिल्डिंग आप अच्छी खड़ी कर सकेंगे। सो जब आपको लगता है यार मेरा R3 मेरा R4 या फला वो ये काम कर रहा है, they have built up upon that, तो आपको बेसिक्स अपने लेवल पे स्ट्रॉन्ग करनी है जो आपकी लेवल की रिक्वायरमेंट है, एंड व्हाटएवर यू आर डूइंग लग के एज अ प्राइमरी रेजिडेंट करेंगे उस रोटेशन को, चाहे आप उस सब स्पेशलिटी ना भी करेंगे आपने, तो दैट इज हाउ यू मेक द मोस्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग।
One last question. You may not like it. Orthopedics में अब we're seeing a trend. Initially ये था कि it was a man's field, total man's field. अब we're seeing कि we're having female graduates come in. Do you think that's something that women can do? And Can do, yeah, should do. should do. And would you want women to come forward and do? देखिए ऑफ कोर्स अगर आप प्रिंसिपली पूछे तो ऑर्थोपेडिक्स का जो चीज़ थी वो देयर वर टू प्रॉब्लम्स वन वाज कि ऑफ कोर्स इट वाज वेरी फिजिकली डिमांडिंग जॉब तो इस वजह से खवातीन ट्राई आउट करती थी बिकॉज एक ज़माने में मैनुअल बहुत काम था एंड इट नीडेड लॉट ऑफ स्ट्रेंथ जो अभी भी है ऑफ कोर्स इट्स नॉट ऑल देयर बट डेफिनेटली पावर टूल्स के साथ उन चीज़ों के साथ ऐसा नहीं है कि नहीं की जा सकती बट करंटली व्हेन यू सी अ सिनेरियो वेयर ऑल द फैकल्टीज मेल most of the residents are male. So female की survival is not just about physical strength in there, it is surviving in that environment. Yeah. But definitely जिन लोगों ने किया है, they've gone through. इसमें कोई of course उस तरह की चीज़ नहीं होती कि somebody doesn't want them to come in या वो, but एक of course एक जो माहौल बना होता है एक तरह का somebody else comes in, तो उसी को adapt करने में मुश्किल होती है, बाकी लोग तो अपने हिसाब से चल रहे होते हैं. So it's more of a traditional thing. It's not something के intentional था ये चीज़. बट वो देख के और उसको तो लड़कियां आने नहीं चाहती थी उसमें बट पहले भी आई हैं 2-3 लड़कियां जो हमारी ग्रेजुएट्स हैं पहले भी अब भी रिसेंटली आनी शुरू हुई हैं सो आई थिंक इट इज डूएबल देयर आर लॉट ऑफ सब स्पेशलिटीज इन स्पाइन्स इन ऑर्थोपेडिक स्पाइन इज वन ऑफ देम फुट एंड एंकल है हैंड सर्जरी है पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स है वेयर फीमेल ऑर्थोपेडिक सर्जन्स आर एक्सेलिंग द वर्ल्ड ओवर हमारी तो खुद स्कोलियोसिस रिसर्च सोसाइटी की हो तो करंट प्रेसिडेंट इज अ फीमेल उससे पहले भी सीरीना हु थी सो देयर हैव बीन फीमेल स्पाइन सर्जन्स यानी डिफॉर्मिटी वाले स्पाइन सर्जन बिकॉज पार्ट ऑफ पीडियाट्रिक तो बहुत आते हैं सो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी एंड ज़रूर आना चाहिए एंड आए बट ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग और हुआ भी है कुछ लोग आए हैं पर छोड़ के चले जाते हैं तो वो दैट गिव्स अ फर्दर एक स्पीड ब्रेकर लग जाता है उस पर वो कहते हैं ये लड़की आएगी तो फिर छोड़ के चली जाएगी बीच में बट ये कि आई डोंट थिंक इट्स नॉट समथिंग दैट इज नॉट डूएबल बट जो भी आए वो ये सोच के आए कि उनको जरा डबल मेहनत करनी होगी दे विल हैव टू प्रूव देमसेल्व्स ओवर एंड अबव द मेल रेजिडेंट्स टू सर्वाइव सो ये शुरू में होगा अनटिल जब तक हम जनरल सर्जरी की तरह इक्वलाइज ना हो जाए तब तक ये चीज़ आई थिंक रहेगी बट आई थिंक टाइम्स आर चेंजिंग एंड वी विल सी दिस ट्रेंड probably in our lifetimes only. Thank you, sir. Thank you for doing this. Thank you so much. Pleasure is all mine. Thank you.